Evening everyone, warm welcome to your own YouTube channel. We call it as Exam Now. My name is Madhav. I welcome you all in the next important session of Finance Current Affairs, and we call it Finance Now, where we discuss all the important finance current affairs. Specifically, we target the RBI circulars as well as SEBI circulars and other regulatory bodies update along with the general finance current affairs. If you're preparing for any regulatory body exam or any bank examination, this session is a must watch session. Trust me, if you will join with me in this particular session for next 2-3 sessions consecutively, I can assure you after that it is going to become your habit, after that is going to become the need of your day where you want to learn, where you want to understand what's going on in the financial world. First, before I start with the discussion, I just need to know in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine. We are good to go. May I have a reply, please? एक बार आप मुझे बता दो if everything is fine so that I can quickly begin the discussion. आज की discussion काफी important है और वो important है with two aspects. The first aspect we have is RBI क्योंकि जब भी कभी we come across or whenever we cover different RBI circulars, different RBI notifications, it talks about today's term or today's hero term which we are going to discuss. और इस टर्म से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में ऑन रेगुलर बेसिस पूछे जाते हैं. ठीक है? If everything is fine, give me yes sir. Okay. So I would request everybody quickly copy the link of this session and share it with your friends so that more and more students they can join us live. And once you have done it, we will quickly begin the discussion. Before I start, how many of you have heard about a term that is FATF? How many of you have heard about a term FATF? If you have heard about this term, start typing the full form, or FATF stands for what? Start typing it in the comment section. And today I will be covering all in and out of your FATF terms so that if any question is asked in the examination, you will be in a position to answer it pretty well. Along with that, I have a very important announcement for you guys. If you are preparing for any competitive examination और आज की जो न्यूज़ या आज की जो news which I'm going to give you, an update which I have for you from the team of Exam Now is going to add on, or it is going to give wings to your preparation. And the point is, what is that? For that you have to wait for some time. For that you have to stay with me so that I can give you the update. ठीक है जी? चलो, I guess there's no more point waiting for more. I guess we are good to go. चलो. Today's point of discussion is related to a very important term that is called as FATF. Now the question is, what do you understand by the word FATF? So FATF stands for Financial Action Task Force. FATF stands for Financial Action Task Force. Now the question is, so why we are discussing this term, why this term is important, why this term was in news? The answer is very obvious. Sir, regarding FATF, recently RBI has released a notification. Now the question is, so what notification has been released by RBI? So the notification was FATF meeting was held recently. FATF meeting was held recently, and about the updates of this meeting, please pay attention, about the updates of this meeting, about the updates of this meeting, RBI has released the notification. मतलब FATF इतना ज़्यादा important है कि RBI ने अपनी वेबसाइट को यूटिलाइज किया, RBI ने अपने टाइम को, अपने इंफॉर्मेशन sharing platform को utilize किया to share the latest update, or to share the current event which has happened with respect to the term that is FATF. Now the question over here is कि सर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि FATF क्या है. I will be coming back to today's news and then we will be discussing more. Whenever this question is asked, what is FATF? Sir, FATF stands for Financial Action Task Force. इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कि सर कंट्री एक्स, मे बी कंट्री वाई, मे बी कंट्री जेड, मे बी कंट्री ए अराउंड इंडिया. We say this n number of times that the countries around India, maybe country A, maybe country X, Y, Z or A, these countries, they are disturbing countries, means they are disturbing India. And we also say that these countries are countries which receive
terrorist funding. These countries are those countries which receives the funds to disturb the global peace, which receives the funds to impact the global integrity. So there is an organization which is not only talking about or which is not believing in the blames which are given by a country like India, rather an international organization has been set up, that is FATF, and this FATF is responsible to audit it is responsible to audit each and every nation inward flow of funds. तो हर एक कंट्री में जो inward flow of funds है, these funds are audited by an organization, we call it as FATF, and it tries to identify, it analyzes, it tries to identify कि भैया what is the source of incoming funds in the country, how these funds are going to be utilized in the country. Is there any situation where these funds which are incoming in the country, they are used for the purpose of terrorism, or maybe a country which allows easy management of black money, or which allows easy going money laundering in their nation, or maybe the funding is done basically for the terrorism purpose. So in this case FATF is responsible to identify कि भैया अगर किसी भी country में inward flow है, what is the reason of that flow, why that amount is flowing, what is the source of that flow, and what is going to be the destination of that amount. And once the destination and source is satisfied, then it's fine. Otherwise FATF will start creating a report, and on the basis of its report it rate the countries, or I would say it categorizes the countries into different categories. The first category is blacklist. The blacklist says FATF की blacklist क्या है? So it is basically means the list of countries which are not allowed internationally to receive funds, which are not allowed internationally to accept deposits openly from the world, openly from the global economy. तो जैसे मान लो कि इंडिया में अगर कोई इंडियन कंपनी या कोई इंडियन एंटिटी is planning to invest outside India, and if they are planning to invest in a nation which is included under the blacklist as per FATF, उस कंट्री के लिए RBI एक्सचेंज रेट करने ही नहीं देगा. RBI कहेगा भैया हमारे पास पैसा है ही नहीं आपको फॉरेन करेंसी देने के लिए, बिकॉज RBI follow this compliance that we will be allowing our nation to trade, we will be allowing our government to get involved with only those countries which are not highlighted by FATF. So one is blacklist, other one is grey list. Grey list means, I'll not say these nations are banned, but these nations are highly regulated. With these nations, open trade is not allowed, and if any country is doing an open trade, that means the country can involve in a risky pair, and in that case also RBI will come up with certain new rules कि grey countries में either you cannot invest, and if you are investing, then the conditions, the norms, the way, the procedure is very different. So this is basically FATF. इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसकी क्लैरिटी और ज्यादा आएगी, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी द मोमेंट आई विल बी रीडिंग अबाउट FATF. तो अगर हमसे कोई पूछे कि FATF क्या है, तो मेरा आंसर क्या होगा? एज द नेम सजेस्ट, इट stands for Financial Action Task Force, and it is an intergovernmental policy making body, and this body has been created back in 1989. This body has been created back in 1949. So 1989 क्यों बनाया गया इसे? So it was set up to set standards and promote measures to fight against money laundering, to fight against terrorist financing, as well as to fight against financing of proliferation of weapons of mass destruction. इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इसे क्यों बनाया गया. देखो कभी भी हम कहें कि if any destruction, if anything is done in any country, the source is going to be funds. हम कहते हैं कि सर उस कंट्री ने बिना वर्ल्ड को बताए, let's suppose they have developed the nuclear bomb. Now if they have developed a nuclear bomb, this is what, sir? It is a weapon of mass destruction. Secondly, if a nation is allowing the world to invest,
if the nation is allowing the world to invest so that they can uh, increase the development rate in its own nation, but simultaneously they do not check the source of they do not check the source of investment. So that is again a risky affair. बट इससे होगा क्या सर? कंट्री का तो फायदा हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, कंट्री का तो फायदा हो गया सर, कंट्री में फंड्स आ रहे हैं जिससे टेररिस्ट को ट्रेन किया जा रहा है, टेररिस्ट की ट्रेनिंग चल रही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे फिर से आई वुड से द कंट्री का तो फायदा हो गया, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सुपर पार, दे आर ट्राइंग टू ओवर पार द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन प्रैक्टिकल नोट पे दिस इज नॉट करेक्ट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस FATF बनाया गया. FATF क्या करता है सर? इट कम्स अप विद सर्टेन लिस्ट ऑफ कंट्रीज और वो लिस्ट शेयर करता है विद द सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, और ये कहा जाता है कि यू मस्ट कंट्रोल द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम योर नेशन टू द कंट्रीज which are provided in the list. अगर सारे central banks, if the central banks of all the world, or I would say central banks of all the different countries in the world, if they are controlling the flow of funds to these nations, ऑटोमेटिकली इन कंट्रीज के पास फंड्स कम होंगे तो भैया ये जो मास वेपन बना रहे हैं फॉर डिस्ट्रक्शन वो नहीं बन पाएगा, ये जो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मनी वो नहीं हो पाएगी, या फिर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा. इसी पर्पस के लिए, इसी लॉजिक के लिए दीज organizations, or I would say this FATF has been set up. So Financial Action Task Force is what? Sir, it is an intergovernmental policy making body which is created in 1989 to fight against money laundering. Money laundering का मतलब इंडिया में you earned funds और आपने पैसा कमाया और उस पैसे पे टैक्स ना देकर सीधा उस पैसे को लेट्स सपोज बांग्लादेश भेज दिया और बांग्लादेश में उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया और बांग्लादेश ने पूछा भी नहीं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फंड. बांग्लादेश ने पूछा भी नहीं व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फंड. तो बांग्लादेश तो अपनी जगह ठीक है, भैया हमें तो पैसा चाहिए, लेकिन आरबीआई कहता है कि भैया अगर आपकी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है तो उसे आरबीआई चेक करे. बट अगर मान लो कि पैसा जब आरबीआई के बिना एक्सचेंज के बाहर गया, बिना इंफॉर्मेशन के बाहर गया, तो क्या करे? तो उस केस में आरबीआई क्या कहता है कि भैया हम FATF की सुनते हैं. अगर FATF ने कहा कि बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेश में फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होने चाहिए, सो देन नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ फंड्स बट बाय ऑल मींस विल ट्राई टू स्टॉप the flow of funds. For example, when you are crossing the border, each and every measure will be taken to avoid any kind of fund flow towards the nation. So that is what I'm trying to say. So its work matter because financial crime undermines the integrity of international financial system. Its kind of work of FATF is very important because if there is an financial crime happening in a nation, that will impact the entire financial system. It will impact the international financial system. It will increase the cost of doing business. That means it will increase the cost of doing cross-border business and can finance organized crime, terrorism and proliferation risk. कि भैया अगर इसको ध्यान से नहीं किया गया तो एंड ऑफ द डे इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री पे नहीं, सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज पे नहीं होगा. अगर मान लो पाकिस्तान में ये हो रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे ग्लोब पे है, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे है. सो FATF मॉनिटर मेंबर्स as well as partner jurisdictions assess national regimes through mutual evaluations. मतलब सर जो हमारा FATF है उसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स के साथ साथ उसकी बहुत सारी पार्टनर जुरिडिक्शंस हैं जिनको वो मॉनिटर करता है, और इसके लिए FATF has come up with certain types of agreements, with certain types of mutual agreements जिसके तहत it evaluates, it investigates, it check all the required aspects in order to identify misflow of the funds on the global level. It also issues the public statements and names countries that present serious strategic defenses so that government and regulated entities can manage risk appropriately. तो भैया इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है. FATF openly अपनी वेबसाइट पे list of nations देता है, and those list of nations which are presented by FATF on its website in different categories is very important because अगर इन कंट्रीज का ध्यान नहीं रखा गया then the things are going to be really very different. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात.
समझ आ गया पॉइंट? इफ इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट जस्ट गिव मी यस सर. If it is clear till this point, just give me yes sir. Wait, मैं बताऊंगा कौन कौन सी कंट्रीज हैं under the category of blacklist. I'll tell you, don't worry. I'll tell you, don't worry. ठीक है? So, if I talk about if I talk about the current discussion, तो basically मैं बस इतना चाहता हूँ कि I just want you guys to reply that this part which I'm talking about FATF is clear to you. अब हम बात करेंगे about the meeting and then we will be discussing in detail. Then we will be discussing in detail about the same meeting so that we have the अंडरस्टैंडिंग कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आरबीआई बनाएगा तो किस तरह का क्वेश्चन आरबीआई अपने एग्जामिनेशन में बना सकता है. ठीक है? इज इट फाइन? ओके देन पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल टास्क फोर्स की जो मीटिंग है, दिस मीटिंग वाज द लास्ट मीटिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स हेड. वो क्या है मैं बताता हूँ. Financial Action Task Force plenary meeting Mexican presidents under the Mexican presidency of Elisa de Anda Madrazo concluded with an action agreed to stop fraud and other criminals from profiting from the illicit activities. तो भैया ये है कि अभी recently 6th FATF मीटिंग हुई है और ये जो 6th FATF मीट हुआ है, this plenary meet was conducted on, I would say, from 17th to 19th 17th to 19th of जून 2026. तो आप सोच रहे होंगे कि सर जून की बात आज क्यों बता रहे हो भैया, मैं क्या करूं. आरबीआई ने जून की बात के बारे में अपडेट ही अपनी वेबसाइट पे जुलाई में दिया है, तो मैं तो आरबीआई वेबसाइट फॉलो कर रहा हूं. मैंने वहां से आपको ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लाकर दे दी. ठीक. अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर व्हाई आरबीआई हैज इशूड द नोटिफिकेशन. द आंसर इज वेरी ऑब्वियस. इसके कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई ने नोटिफिकेशन क्यों दिया, आरबीआई ने अपना समय क्यों वेस्ट किया या अपना समय क्यों यूटिलाइज किया, उसका रीजन है सर एफएटीएफ check out money laundering as well as terrorist financing, which often involves cross-border transactions. So if financial institutions deals with customers or businesses located in countries with weak anti-money laundering or terrorist financing systems, the risk of illicit financial flows increases. So since India is a member of FATF, RBI regularly adopts the FATF latest public statement and advise regulated entities. तो RBI ने कहा कि भैया FATF की latest statement of FATF is adopted by RBI. तो RBI ने कहा भैया मैं तो इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, अगर मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ तो आप मेरे regulated entities हैं, and then I ask my regulated entities to follow those conditions in order to avoid issues in the future. ठीक है जी. अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है सर, ये जो नोटिफिकेशन है, दिस नोटिफिकेशन हैज बीन issued in order to ensure that कि financial institutions को पता हो that they should very, I would say, they should be pretty ready. They should be pretty cautious before witnessing the flow of international funds. They should fulfill the international standards. Adequate managing risk are need to be taken. तो ये regulated entities को inform किया और उनको कहा कि जो भी required steps which are required to be taken, those required steps should be taken in terms of investigation. कि अगर आपके पास कोई इनफ्लो ऑफ फंड आ रहा है तो आप पहले चेक कर लो कि कंट्री कौन सी है, और अगर वो कंट्री रिस्की कंट्री है तो उसके रिलेटेड
जो भी norms है which you have already created, do fulfill those norms in order to avoid any kind of misflow in the country. So the meeting combined three kind of work. इस meeting में तीन चीजें होती है. पहला, naming and classifying the jurisdictions by risk. हर बार jurisdictions को by risk classify किया जाता है कि कौन सी country कौन से risk में है. Along with that, adopt करना mutual evaluation reports under the new more outcome focus assessment round. तो भैया अब क्या हो रहा है, mutual evaluation reports में बात की गई थी. This report was discussed in March 2026 and now in the month June 2026 it has been adopted. क्या है ये, इसको अगर मैं बात करूं तो ये है कि सर असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, इटली, सिंगापुर अंडर द न्यू राउंड ऑफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन हैज बीन टेकन कि भैया इनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट करो, चेक करो कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड व्हाट नॉट. लास्ट इज अप्रूव स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट्स ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स. अप्रूव दी स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट्स ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स कि भैया अगर ये थ्रेट्स हैं तो इसके लिए हमें ये इनिशिएटिव्स, ये प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए so that we can counter the current scenario. For example, जैसे आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लिया कि सर हमने एक नया इनिशिएटिव लिया that in order to identify any kind of transaction which can be categorized as fraud transaction, उसके लिए सर हमने नया सॉफ्टवेयर बनाया, ये अपने आप आइडेंटिफाई करेगा. तो एफएटीएफ कहेगा दिखाओ और फिर वो सॉफ्टवेयर एफएटीएफ शेयर करेगा with the other member countries as well so that everybody should adopt that particular software which will have a positive impact on the entire economy. ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर which is very important, जहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. और वो क्वेश्चन आने के चांसेस ये इस पॉइंट से हैं, सर रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया गया मिस्टर जी थॉमसन ऑफ यूनाइटेड किंगडम will be the president of FATF from July 2026 to till June 2028. तो आप कह सकते हैं कि under the Mexican presidency, this was the last meet. ये एक last meet थी which has been concluded. और now this the head will be replaced from July 2026 onwards, and it will be replaced by whom? Sir, it will be replaced by UK. और UK में भी अगर हम बात करें तो कौन है, who is going to take the presidency of FATF? Then the answer is Mr. G. Thompson. Any idea, guys, who is Mr. G. Thompson? Is it the Prime Minister of UK or maybe the Finance Minister of UK? Any idea? If anybody can give me the answer in the comment section. बात ये सर इंपॉर्टेंट कहानी जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा. वो इंपॉर्टेंट कहानी क्या है सर? FATF comes up with three categories. The first category is blacklist, second category is grey list, and third category is enhanced or monitoring attention. Enhanced or monitoring attention का मतलब क्या हुआ कि सर आप ये कह सकते हैं that it is not at a lower rate as well as it is not at a very high rate, but it is somewhere at a moderate rate of risk. It is somewhere at a moderate rate of risk. अब इसके बारे में पढ़ना word by word बहुत important है. Please pay attention. If somebody asks me what is this blacklist, so these jurisdictions, they have serious strategic deficiencies. वो jurisdictions हैं, ये वो countries हैं, countries with serious and persistent deficiencies in their system to prevent money laundering. मतलब ये वो countries हैं जो चाहती नहीं है कि money laundering prevent हो. They don't want that terrorist financing should stop. So these countries, they pose a very high risk to the global financial system, and due to their very high risk on the global level, they are categorized as high risk. They are categorized as high risk countries, and FATF asks its member countries to apply countermeasures as well as strict financial restrictions on these countries. मतलब इन countries के साथ या तो deal मत करो, कोशिश करो deal ही मत करो, and if you are dealing with these countries, then you should be dealing with enhanced due diligence. Enhanced due diligence का मतलब कि भैया वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. That is the case. You have to think, you have to analyze, you have to check everything thrice before you are investing, before you are trading, before you are accepting or sending funds to these nations. अब इसमें ये होगा कि अगर मान लो इंडिया से पैसा कोई बाहर भेज रहे, लेट्स से टू दी ब्लैक लिस्टेड कंट्री नॉर्थ कोरिया, तो आरबीआई उस पर बहुत गंदा चेक रखेगा और बहुत बार आरबीआई उस
ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट भी कर सकता है. सिमिलरली फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इराक टू इंडिया, तो आरबीआई विल चेक इट एंड आरबीआई may reject it as per the norms which have been given under FATF. इसमें अगला पॉइंट जो आपको समझना है वो क्या, इंटरनेशनल बैंक्स may cut financial ties like World Bank, IMF. They may cut फाइनेंशियल टाइज विद दीज कंट्रीज, जहां पे इन कंट्रीज को कोई लोन नहीं दिया जाता, इन कंट्रीज की कोई मदद नहीं की जाती. As well as due to this, foreign direct investment either becomes zero or declines in these countries, as well as cross-border transaction face severe scrutiny. Cross-border transaction जैसे आरबीआई ने चेक किया, एक नहीं दो नहीं चार बार कि भैया क्यों हो रही है ट्रांजेक्शन, कैसे हो रही है, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, तब जाकर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी थी. As per June 2026, we have only two countries in the list of black criteria. We call it as North Korea and Iran. These are the only two countries which have been included under the blacklist. For these countries, FATF continues to advise jurisdiction to adopt stronger safeguards. जहां पे मैंने बोला आपको क्या क्या, restrict financial relationship, restrict कर दो, खत्म कर दो, फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स रखो ही मत, या फिर स्क्रूटनी को बढ़ा दो, और या फिर कुछ काउंटर मेजर्स ले आओ कि अगर वहां से पैसा आएगा तो उस पैसे को कहां तक हम ट्रेस करेंगे. अब उसके बाद आता है country with enhanced due diligence is required. So those countries for which we require enhanced due diligence, मतलब ना तो वो ब्लैक लिस्ट में है और वो ग्रे लिस्ट से ऊपर निकल चुकी है. Those countries which have come over the grey list marking but they are not yet included in the blacklist. So countries that are not blacklisted but require additional vigilance due to incomplete reforms or specific risk, we call them as countries where enhanced due diligence is required. And Myanmar is still remaining in the same list. So Myanmar continues to remain under the enhanced due diligence because it has not yet fully implemented its FATF action plan. तो अभी तक FATF के action plans हैं, they are pending. Once they will implement it in Myanmar, तो भैया म्यांमार को यहाँ से हटा देंगे. So financial institutions dealing with customers connected to Myanmar, they are expected to undertake additional monitoring and verification. FATF has specifically advised कि जो भी humanitarian assistance है, that means we are giving the assistance for the food, we are giving assistance for aviation of poverty or for financial, for literacy or some other purpose. In that particular case, it has been very clearly said. FATF कहता है कि भैया सोच समझ के पैसा देना, जेन्युइन होना चाहिए. ऐसा ना हो कि ह्यूमैनिटेरियन वॉच में सोशल बेनिफिट्स के चलते आप ये सोचो कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करेंगे, लेकिन वो पैसा कहीं और किसी और गलत पर्पस के लिए यूज हो गया, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को देखना पड़ेगा. तो आरबीआई ने बहुत ही FATF ने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया है the remittance should be genuine as well as legitimate, यानी कि लीगल होनी चाहिए. जो भी एक्टिविटीज हैं ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट शुड बी वेरी लेजिटिमेट, ताकि म्यांमार की वजह से ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट ना हो. सो रिमेंबर दैट देयर इज नो चेंज इन द हाई रिस्क, दैट इज ब्लैक लिस्ट, since the previous review. So right now we have two countries under the blacklist, that is North Korea and Iran, but the enhanced due diligence nation which is not under blacklist but it is close to blacklist only, in that also the country is still the same, that is Myanmar. The country is still the same, that is Myanmar. अब आता है अगला पॉइंट क्या कहता है? So that is grey list. Grey list क्या है? So these jurisdictions they have identified deficiencies in their anti money laundering या फिर counter financial terrorism system which have formally committed to work with FATF. तो यहाँ पे ग्रे लिस्ट जो है that does not mean sanctions are imposed. इसका मतलब ये नहीं कि इन कंट्री से बात मत करो, इनसे रिश्ता तोड़ दो, ऐसा नहीं है. इन कंट्रीज के साथ आप ट्रेड करो, इन कंट्रीज के साथ आप इन्वेस्टमेंट करो, आप इन कंट्रीज के साथ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करो, बट with higher diligence. और अगर आप इन कंट्रीज को लोन दे रहे हैं, you have to charge higher rate of interest because the risk in giving the loan to these countries is pretty high.
So right now, if I talk about grey list, in case of grey list, it doesn't mean any sanction. Instead, financial institutions, they should apply a risk-based approach while dealing with customers and transactions involving in these two countries. अब यहाँ पर काफी important information है जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आएगा, तो वो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएगा इस ग्रे लिस्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन क्या है, सो प्लीज पे अटेंशन. इफ आई टॉक अबाउट द ग्रे लिस्ट, इफ आई टॉक अबाउट द ग्रे लिस्ट, तो ग्रे लिस्ट में चार नाम है जो इंपॉर्टेंट है. वो चार नाम कौन कौन से हैं? सो ग्रे लिस्ट की अगर मैं बात करूं, ग्रे लिस्ट में सबसे पहला जो नाम इंपॉर्टेंट है दैट इज बॉस्निया, दैट इज बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, Herzegovina. These are the, along with this, we have Iraq. These are the two newly added countries. Remember that newly added countries include Bosnia and Herze, Herzegovina, Herzegovina, and Iraq. So these countries they have been added after FATF has identified कि भैया इनमें जो strategy deficiencies हैं उसकी वजह से we can expect कि these countries they are not following the anti-money laundering rules as well as counter financing terrorism rules in an appropriate manner. तो भैया इनको include करो under the grey list, so they have been included. On the other side, in the month of June 2026, we have to remember two more names. One is Nambia, and the other one is, somebody says Algeria, somebody says Algeria, somebody says Algeria, whatever you say. These countries, they have successfully completed their financial FATF action plans. तो जिन्होंने जो भी action plan बनाए थे जिसकी वजह से they were under the grey list, they have completed those action plans and now they have been removed from grey list. They have been removed from grey list. अब आप सोच रहे होंगे कि सर grey list बहुत बड़ी बकेट है क्या? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ग्रे लिस्ट कितनी बड़ी बकेट है, आई डोंट रिमेम्बर, ऑब्वियसली मुझे सारे नाम तो याद नहीं है, बट लेट्स ट्राई कि मैं कितने नाम याद कर पाऊंगा. आई विल बी स्टार्टिंग विथ एंगोला. एंगोला के साथ आई नो बोलीविया. बोलीविया के साथ ये दो कंट्रीज हो गई which are currently the part of grey list. Then we have Bulgaria. Along with Bulgaria, we have Republic of Congo. Republic of Congo के साथ we have Haiti. Iraq तो है ही latest addition. Then we have Kenya. We have Kuwait जो कि मार्च 2026 में ऐड हुआ था. We have Kuwait, then we have Lebanon, Lebanon के साथ साथ we have Monaco. Most importantly जहाँ पे RBI इस तरह के क्वेश्चन बना रहा है तो RBI नेपाल के बारे में पूछ सकता है, तो नेपाल has been included, is in the grey list. उसके बाद we have South Sudan, सीरिया है, वियतनाम है. आपने सुना होगा एक वर्जिन आइलैंड है यूके में जहां पे कोई भी अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो पूछते नहीं है पैसा कहां से ला रहे हो, तो उस वर्जिन आइलैंड को भी इंक्लूड किया गया अंडर द ग्रे लिस्ट. इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द ग्रे लिस्ट. तो आपको याद क्या रखना है? याद आपको बेसिकली रिमूव्ड और इंक्लूडेड नाम ही रखने हैं, बट उसके अलावा इफ यू हैव अ ब्रीफ आइडिया कि कितने नाम है देन यू विल बी इन अ गुड पोजीशन. और ये सारे नहीं है, मैंने बहुत सारे नाम मिस किए होंगे, ये सारे नहीं है, बट मैंने वो नाम जरूर हाईलाइट कर दिए जहां से आरबीआई शायद कभी क्वेश्चन बना सकता है. द वे आरबीआई इज मेकिंग द क्वेश्चंस दीस डेज, अगर क्वेश्चन आया तो आप उसमें आंसर कर पाएंगे. ठीक है जी, फिर हो गई ये बात. तो टाइमलाइंस क्या है सर? अगर हम नॉर्थ कोरिया और ईरान की बात करें, कॉल फॉर एक्शन मेजर्स ओरिजिनली इशूड अर्लियर एंड रीअफर्म्ड इन फरवरी 2026, बट उन्होंने वो एक्शंस पूरे नहीं किए जिसकी वजह से they are still under the blacklist, and if any country is under blacklist then in that particular case restrict
correspondent banking relationship, review or terminate business, monitor all cross-border transactions, and humanitarian transaction may require special regulatory approval. हमने म्यांमार के बारे में पढ़ा. म्यांमार के बारे में actions क्या होंगे? So banks and donors should apply enhanced transaction monitoring, verify humanitarian nature of transfer, and maintain strong documentation of funds. And then we have newly added, in case of newly added in the month of March 2026, we had Kuwait and Guyana. But now, if I talk about the current June announcement, in the June announcement, if I start with the answer, then I would say कि भैया जो जून 2026 है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई हैं. Then the first answer is Bosnia. The first answer is Bosnia. और बोस्निया के साथ बोस्निया का पूरा नाम एंड सेकेंड कंट्री हम सब जानते हैं दैट इज इराक. ठीक है. अब ये तो हो गया एडिशन. ये तो हो गया एडिशन. ठीक है. अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर कौन कौन सी कंट्रीज को रिमूव किया गया, याद है आपको मैंने अभी आपको नाम बताए थे. इफ यू कैन रिकॉल एंड गिव मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. ऐसे ही ये नाम याद होते हैं. अगर अभी याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, वरना घर जाके काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, नाम याद होंगे नहीं. फिर आप मुझे कहोगे कि सर फाइनेंस करंट अफेयर्स तो बहुत टफ है. तो बताओ जरा कौन कौन सी कंट्रीज को रिमूव किया गया. मे आई हैव द आंसर्स प्लीज. एनीबडी? द आंसर इज and Namibia. Namibia. ठीक है, याद रहेगा. आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीबडी. ओके. अब इसके बाद दो पॉइंट्स और हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे लिखे हुए हैं. काउंटर पार्टीज का क्या एक्शन होगा फॉर दीज ग्रे लिस्ट कंट्रीज. सर एक्शन होगा स्ट्रेंथन द केवाईसी प्रोसीजर, मॉनिटर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, वेरीफाई ownership of partners organization and track progress of reforms. Remember that FATF has suspended Russia as member of FATF और आज भी उसकी जो membership है it is still considered to be suspended. It is still considered to be suspended. ठीक है जी. फिर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट. This is all about the updated recommendations which have been given under FATF. तो जुलाई से 2026 से UK will assume the FATF presidency. अब इसमें एक और important point है, वो जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और वो भी लिख लो. दैट इज मिस्टर विवेक अग्रवाल. मिस्टर विवेक अग्रवाल, obviously of India, is selected as FATF, vice president. Is selected as FATF vice president from 2026 to 2027. 2026 to 2027. तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. बस इससे ज्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. दिस इज व्हाट इज FATF एज अ होल, और उसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है. I have written about them. Even I have written about the new membership, or I would say the new presidency. इतना पढ़ लेना. Things are going to be okay. इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ. ग्रे लिस्ट में क्या रिमूव हुआ. सर रिमूव हुआ वो दोनों कंट्रीज में लिख देता हूं. मैंने इतनी बार ये कंट्रीज आपके सामने इंटेंशनली लिख दी ना कि अगर अभी भी आपको याद नहीं हुआ तो भैया मेरी गलती थोड़ी कम है, आपकी ज्यादा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. और एडेड में इराक, और उसके साथ साथ
ठीक है जी, ये याद रखना, ये याद रखना, बाकी जो स्क्रीन पे लिखा है वो याद रखना, इतने में आपका काम हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? ओके, तो प्रिया ने एक क्वेश्चन पूछा विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन विच आई गॉट फॉर यू। तो प्रिया इज आस्किंग कि सर एफएटीएफ की जो मेंबरशिप है उसमें इंडिया भी पार्ट है, दैट इज ट्रू, बट द क्वेश्चन इज सर द recommendations of FATF are binding in nature. First question is, are these recommendations binding in nature? तो अगर मैं कहूँ कि सर अगर मेंबर कंट्रीज की हम जब बात करते हैं एफएटीएफ के लिए, ये जो कंडीशंस हैं उसमें एक वर्ड आता है दैट इज मैंडेट। आई रिपीट, द वर्ड इज मैंडेट। तो 2029 in 2029 FATF ministers they gave FATF a open-ended mandate after 3 decades of operations under a time-bound manner। और अब एक mandate दे दिया गया, एक रूल एंड रेगुलेशन बना दिया गया that yes, if any action is need to be taken by FATF, that can be taken, there is no problem with that, there is no problem with that। तो अब मैंडेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि क्या FATF के पास पावर है that FATF can come up with FATF can come up with tough decisions, can FATF can come up with certain rules which are ought to be implemented or which are ought to be accepted by its member nations। तो हम कह सकते हैं yes। अब आपके जो क्वेश्चन को अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली देखूं, अगर आपके क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिकली देखा जाए, आपका क्वेश्चन ये है कि सर जो मेंबर कंट्रीज हैं, if FATF has said that the country has been included under the category of blacklist, तो क्या हर मेंबर कंट्री को वो सारे स्टेप्स लेने होंगे जो कि FATF में लिखे हैं? तो उसका आंसर है कि FATF actions are, the word you are saying, you are using is compulsory or binding. So I would say FATF actions are binding on member nations, are binding on member nations। लेकिन ये जो बाइंड है उसमें काफी सारे ना पॉइंट्स आ जाते हैं। काफी सारे पॉइंट कैसे आ जाते हैं कि अगर मैं कहूँ एफएटीएफ ने कुछ अनाउंसमेंट्स की, तो एफएटीएफ की अनाउंसमेंट्स जो हैं, उन अनाउंसमेंट्स को आपके जो मेंबर कंट्रीज हैं, दीज मेंबर कंट्रीज दे हैव बीन given this power that they should recommend, member countries should recommend actions FATF actions into its law books, into its law books। लेकिन जब तक वो एक्शन लॉ बुक में नहीं जाते तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि यू आर परफॉर्मिंग इट। सो रिमेंबर, member countries they can recommend FATF action into their law books, but FATF actions, अगर आप कहें, are they legally binded? No sir, they are not legally binded। Why they are not legally binding? उसका रीजन है, every nation we call it as a sovereign nation, and if we are in a sovereign world, तो जो rules बनाए गए हैं by FATF, they are not legally binding, they are not legally binding on the countries। Rather, these are the mutual evaluations, these are the mutual decisions which have been taken under the FATF membership कि we should do this in order to save the entire world। ठीक है जी, आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि बाइंडिंग ना बोलना भी गलत है और बाइंडिंग बोलना भी गलत है। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, FATF announcements or FATF actions are binding on member countries, FATF actions are binding or legally binding on member countries, your answer would be no, your answer would be false। ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लीज पे अटेंशन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन सेज, with reference to the recent preliminary
Financial Action Task Force held in June 2026 considered the following statement. FATF reaffirmed that North Korea, that is Democratic People's Republic of Korea, that is North Korea, and only Republic of Korea is South Korea, as well as Iran, remain in the high risk jurisdiction subject to a call for action. This is absolutely correct. We call that list as blacklist. FATF decided that jurisdiction placed under increased monitoring must work with organization to implement a time-bound action plan. This is correct, and right now in this category we have Myanmar. Next, at the February 2026 plenary meeting, Kuwait as well as Guyana were added to the list of grey list. This is correct. But in the month of June 2026 meeting, the addition has been done, and addition is plus Iraq. Along with that, there is a subtraction of Namibia as well as Algeria. Countries placed on the grey list automatically face mandatory economic sanctions? No, sir. There are no mandatory economic sanctions. FATF listing can influence international banking relations and cross border. Obviously, अगर कोई country FATF में है तो उसमें हम invest करने से पहले 50 बार सोचेंगे. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? So the answer to this particular question is B option, except the fourth statement. All the other options are absolutely correct. Very good. आगे बढ़ते हैं. अगला question देखो. Next point says, with reference to the functioning and objectives of Financial Action Task Force, consider the following statement. FATF is an intergovernmental body that sets global standards to fight against money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. This is correct. FATF conducts mutual evaluations to assess effectiveness of countries' money laundering and counter-terrorism financing framework. Correct. FATF also work on emerging risks such as virtual assets, cyber-enabled frauds, digital financial crimes. This is correct. आजकल इस पे काम चल रहा है. Countries listed by the FATF automatically lose their membership in international financial institutions. ऐसा नहीं है. हाँ, ये सही है कि अगर कोई country grey list में है या black list में है, to these countries which are listed in these lists, World Bank or IMF may not provide them with the loan, but it is not the case that automatically their membership will be cancelled. It is not the case. FATF works with regional bodies like FATF style regional bodies to monitor compliance globally. That is correct. India में भी ऐसी body setup की गई हैं like FIU शायद आपने सुना हो, FIU India. So all these are the initiatives taken in order to coordinate the fund flow in the country to counter terrorism, to counter terrorist funding as well as money laundering. So answer to this particular question would be the same, that is B option. Would be the same, that is B option. बोलो क्लियर है, समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल बी मूविंग अहेड. देख लो जी, यहाँ तक कोई भी डाउट हो, दिमाग में कोई बात आ रही हो तो पूछ लो. यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा. 3 क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ. बाद में मत कहना कि सर बताया नहीं था, क्वेश्चन आ गया. वो 3 क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? पहला एडिशन जो हुआ, रिमूवल जो हुआ, उसके साथ साथ एडिशन रिमूवल, और उसके साथ साथ अगर जो अगला क्वेश्चन बन सकता है दैट इज रिलेटेड टू विवेक अग्रवाल और दैट मे बी रिलेटेड टू दी न्यू प्रेसिडेंट 2026 टू 2028. अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस याद रख लिए तो आज की न्यूज से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फॉर श्योर आएगा. यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट प्रीटी वेल. ठीक है जी, फिर हो गई बात, समझ आ गई. अब बढ़ते हैं आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ, which is going to change your preparation strategy, which is going to change the way you prepare for an exam. So why Pakistan is not in grey list or black list after previous open attacks? I think strict action was expected in the recent meetings. हाँ, तो ऐसा सोचा तो था यार कि ऐसा होगा, बट जब चेक किया गया, मॉनिटर किया गया, डेटा देखा गया, उस डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा लगा नहीं कि पाकिस्तान शुड बी इंक्लूडेड अंडर इट. सो राइट नाउ पाकिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रे लिस्ट, रिमेंबर दैट. अब अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है, after the surprise we have witnessed in RBI Grade B 2026 examination, especially the general awareness section, where we have realized कि RBI अब कुछ भी पूछ सकता है
at the name of general awareness, and उसके लिए बहुत ज़रूरी है daily practice. It's very important that we should get into daily practice, and in order to provide you guys free daily practice, I repeat, in order to provide you everybody free daily practice, exam norm has come up with daily current affairs quiz. और ये जो daily current affair quiz है, it will be divided the way we divide. For example, we divide our current affairs as general current affairs, फाइनेंस करंट अफेयर्स, पीआईबी करंट अफेयर्स, तो हर एक करंट अफेयर से रिलेटेड ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज मिलेगा. अब वो क्विज मिलेगा कहाँ सर? वो मिलेगा हमारे वेबसाइट पे. अब इसके लिए आपको करना क्या? कुछ नहीं करना. आपको हमारी ये जो हमारा सेशन है, जिस सेशन में आप मुझे देख रहे हैं, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड अ लिंक टू करंट अफेयर्स फ्री क्विज. और ये जो करंट अफेयर्स फ्री क्विज है, आप उसको जाके ज्वाइन कीजिए, एंड ज्वाइन करने के बाद यू कैन अटेम्प्ट करंट अफेयर्स क्विज ऑन रेगुलर बेसिस. यू कैन अटेम्प्ट द करंट अफेयर्स क्विज ऑन रेगुलर बेसिस, एंड ट्रस्ट मी, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स को रिवाइज करना, मैं कहता हूँ जितना मर्जी करंट अफेयर्स पढ़ लो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. तो ज्यादा फायदा होगा, द बेनिफिट विच यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट, दैट विल बी फ्रॉम प्रैक्टिस. और उसी को या उसी चीज को आप तक पहुंचाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू दैट प्रैक्टिस, एग्जाम नॉर्म हैज कम अप विद दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. हमारे लिए बहुत टफ है, कीपिंग इन माइंड द करंट resources we have, the current strength we have, but अब कमिट कर दिया तो कर दिया, तो उस कमिटमेंट के तहत we have come up with this. If you allow me, I'll quickly showcase you what I'm trying to say. देखते हैं अगर मैं आपको दिखा पाऊं. आई गेस स्क्रीन विजिबल होगी, और अगर ये स्क्रीन विजिबल है तो आप देख रहे होंगे. मैं अपना अगर इमेज हटा दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा. तो ये डिस्क्रिप्शन में बहुत क्लियरली है, करंट अफेयर्स फ्री क्विज. और ये जो क्विज है ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट होगा, और आपको रेगुलर बेसिस पे इस क्विज को अटेम्प्ट करना है, सो दैट यू कैन नॉट ओनली रिवाइज योर करंट अफेयर्स, यू आर ऑल्सो लर्निंग ऑन रेगुलर बेसिस. तो मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी अ plus for you, it's going to be a great help for you. So from today onwards, guys, from today onwards, start attempting the quiz. The quiz is available, the link is in the description below. It is free of cost और रोज अपडेट होगा. और यहाँ से आपको जो क्वालिटी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, those quality current affair questions will be available on regular basis. I hope you must have enjoyed. I hope you must have liked this initiative. Do comment in the comment section कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा, और इस इनिशिएटिव के अलावा अगर आपकी कोई और फीडबैक हो, दैट व्हाट एल्स एग्जाम नॉर्म कैन डू फॉर यू फॉर 2027 अटेम्प्ट, सो दैट अगला अटेम्प्ट हमारा शॉर्ट अटेम्प्ट हो, क्योंकि इस बार ग्रेड ए के आने के चांसेस भी हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ग्रेड ए एग्जामिनेशन कैन आल्सो कम, व्हिच विल बी अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. तो अगर ऐसा हुआ तो आपको और हमें, वी हैव टू बी कलेक्टिवली ready for the examination, क्योंकि इस बार हम सिर्फ ग्रेड बी नहीं, ग्रेड ए को भी अटेम्प्ट करने वाले हैं. तो उसके लिए आपको जो भी हमारी मदद चाहिए, जो भी हमारी हेल्प चाहिए, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन योर सजेशंस, जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं, सो दैट वी कैन फुलफिल दोज सजेशंस बिफोर 2027 अटेम्प्ट. एंड कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा हाउ वाज द टेस्ट, क्या टेस्ट की क्वालिटी अच्छी थी, क्या क्वेश्चंस अच्छे थे, और आपके कितने मार्क्स आए. इफ यू कैन शेयर, डू शेयर योर मार्क्स एज वेल in the today's current affairs quiz, which is available in the link which is given below, free of cost on the exam norm website. Done. So thank you so much, guys. We'll catch you in the upcoming sessions to go. Bye bye, take care, good luck, see you soon. So do we have to read a particular source to attempt these quizzes, or just attempt the quiz and read the explanation? See, करंट अफेयर्स की एम ये है कि अगर आप ही मान लो कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग थ्रू विद आवर क्लासेस and then you are solving those questions, it will give you double assurance that whatever you are learning, that is clear to you. First thing. Second thing is, for example, you are learning the current affairs from some other platform as well, then also we invite you to attempt daily current affairs
क्विज ऑन आवर वेबसाइट, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी एंड यू विल बी ऑब्वियसली लर्निंग न्यू थिंग्स। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे मैंने नोटिस किया है कि जो न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, हो सकता है किसी और को इंपॉर्टेंट ना लगी हो। जो न्यूज़ मनीष सर को इंपॉर्टेंट लगी हो सकता है वो किसी और को ना लगी हो। तो अगर आप फ्री में अगर आपको ये क्विज मिल रहा है तो आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, भले आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। और एक और बात बोलना चाहूंगा प्रिया, वेन एवर वी आर practicing the current affairs quiz, don't take it as an test. Don't think that I have to judge myself that what or how many marks I'm going to score in this particular test. Current affairs quizzes, current affair tests, they are only and only the building blocks of your journey. The actual test will be the day when you will be writing the examination. उतने टाइम तक जितने भी जनरल अवेयरनेस रिलेटेड आप टेस्ट देंगे, टेक इट एज अ लर्निंग कि जो आया बहुत बढ़िया, जो नहीं आता उसे लर्न कर लो, दैट मीन्स गो थ्रू विद द एक्सप्लेनेशन एंड द थिंग्स आर डन। ठीक है जी, क्लियर हुआ? आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट्स में आपको मुझे देने हैं सजेशंस कि भैया आपके क्या ऑर्डर हैं आपके अपने एग्जाम नॉर्म के लिए, कि हम 2027 में आपके लिए क्या करें। दूसरा, आपको शेयर करने अपने मार्क्स इन द क्विज विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट टुडे, एंड उसके साथ साथ कोई और आपकी फीडबैक हो तो वो भी आप दे सकते हैं। वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमेंट्स। ये कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर आप कमेंट्स नहीं देंगे हमें पता कैसे चलेगा कि आपको चाहिए क्या। और अगर आपको लगता है कि हम आपको वो दे सकते हैं जो आपको चाहिए, सो यू हैव टू राइट द कमेंट फॉर श्योर।